Hello students, today we will start the chapter number 7, properties of triangle. So today we will discuss about the triangle, angle sum of property of triangle, exterior angle property of triangle, interior angle of property of triangle, triangle inequality property and Pythagoras theorem. So let us revise a few things about triangle. A triangle is a closed figure made of 3 line segment. It has 3 vertices. It is a corner of the triangle and 3 sides, this, and 3 angles, this. So A, B, C. Vertices is A, B, C is vertices, and angle AB, angle BC is sides, AC is sides. Now angle A, angle B and angle C is angle. Now on the basis of sides, there are 3 types of triangle. First is equilateral triangle. In equilateral triangle, all sides are equal, all angles are equal. In isosceles triangle, 2 sides are equal, and in isosceles triangle, in scalene triangle, different, all are unequal, all angles are unequal. Now let us discuss about medians of triangle. What is median of triangle? A line segment joining the midpoint of a side of a triangle to its opposite vertices are called median of a triangle. Like this, it is a vertices and joined to the midpoint of a side. Okay, now it is median. A, B, C, D, E, F. So it is a medians of triangle. Angle DEF are the midpoint of a side, and BC, AC and AB respectively of triangle ABC. Then the line segment AD, DE and CF are the median of ABC. Next is altitude. Altitude of a triangle. In a triangle, the line segment drawn from the vertex to the opposite sides so that it become a perpendicular to its opposite is called altitude of a triangle. A triangle has 3 altitude with respect to each side, like angle A, B, C, D, E, F. It is perpendicular point. In figure, AD, BE and CF are the 3 altitude of ABC, triangle ABC, drawn respectively from A on BC, from B on AC and from C on AB. So it is a altitude of triangle. Now next topic is angle sum of property. Angle sum property of a triangle. So what is angle sum of property? The sum of measure of 3 angle of a triangle is equal to 180 degree. Here angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So it is angle sum property of a triangle.
angle AB, angle CD intersect at O such that AC and DB are parallelogram. If CAB, like this 35 degree, we have given this, and CDB 55, we have given this, then we have to find BOD, we have to find this one. Okay. So here angle BDO, it is 55, and angle OAC is 35. See, angle this and angle D, angle C and angle D means angle OCA is equal to angle ODB is equal. How? By alternate इंटीरियर एंगल. सी देखो, अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर देती तो ये ट्रायंगल आ जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है, तो जब मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो ये इंटीरियर एंगल बन जाएगा. लेकिन इसका अंदर का जो पार्ट है दैट इज दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल, दिस वन इज इक्वल. So it is alternate interior angle. So एंगल हमें दिया हुआ है D, एंगल D कितना है हमारा 55, then angle C is also 55 by alternate interior angle. Same thing, angle A is 35, so angle B is also 35 because it is alternate interior angle. Then we have to find these values, these angle. Then angle sum of property, by angle sum of property, see in angle BOD, in triangle BOD, angle O plus angle D plus angle B is equal to 180 degree. Angle sum of property now, angle O we have to find angle O, D is 55 and B is 35. Now 180 minus angle O is equal to 180 minus 55 plus 35 is 10, 90. Now angle O is 90 here. This is 90 degree. Okay. The question answer is 90. AB here, this is the figure.
have given 50 degree and 40 degree. So in the adjoining figure, AB and CD are parallelogram. Angle A is 50 degree, angle B is 40 degree. Find the measure of the remaining 4 angles. Remaining 4 angles we have to find. So give reason of your answer. So क्या करना है, हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं. किस तरह से फाइंड करेंगे? So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle O is equal to 180 degree. Angle sum by angle sum of property. We will write here angle sum of property. Next, now angle A is 50 degree, angle B is 40 degree. We will find O and 180 degree. Now angle O is equal to 180 minus, it will be 90. So 90. So angle O is 90. If angle AOB is 90 degree, so angle COD is also 90 degree because of vertically opposite angle. Okay, angle AOB is 90 degree, then angle COD is also 90 degree because of vertically opposite angle. And if angle A is equal to 50 degree, so angle D is also 50 degree because of alternate interior angle. Same, angle B is equal to 40 degree, so angle C is also 40 degree because of alternate interior angle. So it is a reason, it is angle sum of property. Here it is a vertically opposite angle, here alternate interior angle, here alternate interior angle. Okay. Now question number 3rd. So what is the question? It is a figure. Angle A, B, C, D. We have given 80 degree and we have given 130 degree here. In the adjoining figure, measures of angle BAC and ACD are indicated. Calculate the measure of a remaining angle. Is angle ABC is isosceles? ये पूछ रहा है कि क्या ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. वो हमें कब पता चलेगा? जब हम ये दोनों एंगल फाइंड कर लेंगे. आफ्टर फाइंडिंग दिस एंगल, उसके बाद हम पता लगा सकते हैं इट इज आइसोसेलेस और नॉट. So first we have to find this angle. How? See, it is 30 degree. Means it is exterior angle of property. Here you don't know about the exterior angle of property, इसलिए हम क्या करते हैं, अभी exterior angle of property से नहीं फाइंड करेंगे, हम इसको सेकेंड मेथड से फाइंड करेंगे. ठीक है, तो देखो ये है आपका 30 डिग्री और ये आपको नहीं पता. ठीक है, तो लेट इट is x and it is y. So angle x plus 180 is 180 degree. It is a line and जब ये लाइन होती है कट, तो ये कंप्लीट कितना एंगल बनाती है? 180 में बनाती है. सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ x प्लस 130 इज 180. तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Here what is the value of x? 50. ओके, नाउ इट इज 50. कैसे फाइंड किया हमने फाइंड किया, ये लाइन है और लाइन पे जो एंगल बनता है वो पूरे 180 डिग्री का बनता है.
जिसमें से हमने 130 तो पता है, अब हमें ये फाइंड करना है, तो मैं यहाँ x प्लस 130 और 180 कर सकती हूँ। यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 50 डिग्री आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 50 डिग्री। नाउ एंगल सम ऑफ बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल A इज 80, एंगल B इज y, sorry it is plus angle C is 50 degree. Now angle Y is equal to 180 degree minus what? 80 plus 50 is 130. Now it will be again 50. So angle X and Y is 50 degree. So both angle are equal. So it is isosceles triangle. अब दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल हो गए हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, द एंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। Now question number 4, in the given triangle ABC, see it is 110, it is C, it is B and it is A, and this is both are equal. In triangle ABC, AB and AC are equal. Find all three angle of a triangle. आपको पता है ये और ये एंगल सेम है, ठीक है, तो हम इस एंगल को x ले सकते हैं, इस एंगल को x ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। नाउ सी अगेन ये लाइन है, और लाइन इसका हाफ पार्ट जो है हमारा 110 है, हाफ पार्ट हमें नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे देती हूँ y, सो y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। Now y is equal to 180 minus 110 is 70 degree. So it will be 70. Now angle sum of property by angle sum of property in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Now angle A is 70 degree, angle B is x and angle C is x is 180 degree. Now x is equal to, it's 2x is equal to 180 minus 70. It will be 110. It will be 110. Then 2 डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55. आपकी x की वैल्यू 55 निकल गई है, मीन्स इट इज ऑल्सो 50, इट इज 55, इट इज ऑल्सो 55। और ये हमने कैसे निकाला हमने 180, बिकॉज y दिस इज दिस लाइन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, बिकॉज जो लाइन होती है ये पूरा एक 180 का एंगल बनाती है। सी ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये पूरी लाइन एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, जिसमें से अगर मैंने हाफ पार्ट आपको गिवन किया है इट्स 130, तो आप ये पार्ट आराम से निकाल सकते हो। इसी तरह से हमने ये वाला पार्ट निकाला था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, find each of angle of triangle ABC in the adjoining figure AB parallelogram CB. We have given this figure. It is 40 degree and it is 80 degree. It is 40 degree and it is 80 degree, and name is A, it is B, it is C, it is D. Here
BA and CE is parallelogram. So we have to find each angle of a triangle ABC. See, यहाँ पर आपका जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है, ये पैरेललोग्राम में है. मीन्स अगर आपका ये पार्ट सेम है तो आपका ये पार्ट भी सेम होगा, लाइक दिस. बिकॉज आपका ये ट्राइंगल भी बन रहा है जो इसके इक्वल है और ये ट्राइंगल भी बन रहा है जो इसके इक्वल है. मीन्स ये बोथ आर इक्वल बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम. अगर ये ट्राइंगल बन रहा है तो ये ट्राइंगल भी आपका सेम ही होगा. मीन्स इट इज 80 डिग्री, सो इट इज ऑल्सो 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एंगल AB पैरेललोग्राम CE. So angle C is 80 degree. So angle B is also 80 degree because of corresponding angles. Now we will find this value. How? See, in line ACD it is 180 degree because of linear pair. So 40 plus 80 is angle in line BCD, angle 40 plus angle 80 plus angle X is equal to 180 degree. लीनियर पेयर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो यहाँ पे लीनियर पेयर, क्योंकि ये सबको मिला के हमारा पूरी लाइन बन जाती है 180 डिग्री की. ठीक है, इसलिए हम 40 80 प्लस एक्स ले लिया 180 डिग्री में. नाउ वी कैन फाइंड एक्स हेयर. 80 प्लस 40 इज 112 इज 120 एंड 180 माइनस 120 इज 160. ओके, सो एक्स इज it is 60 degree, not 160. 180 minus 120 is 60 degree. So it is 60 degree. Now we can find here in triangle ABC, this part हम find कर सकते हैं. ठीक है, let it is y. In triangle ABC, angle y plus angle B plus angle C, it is angle A. Okay, so angle A is y plus angle B is 80 degree and angle C is 60 degree is equal to 180 degree because of angle sum of property. Now 80 plus 60 is 140. It will be 140. Now 40 degree. Here angle ACX, this triangle at X, and angle ACB, this triangle we have to find. Okay. Now this is the exterior angle, so angle X is equal to angle 50 plus angle, means angle A plus angle B by exterior angle of property. Okay, now angle A is 50 degree, angle B is 55 degree. 50 plus 55 is 105. So X is equal to 105. Now angle sum of by angle sum of property, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree.
Now by angle sum of property, angle A is equal to 50 degree, angle B is 55 degree, and we have to find angle C. So angle C is equal to 180 minus, it will be 105, so it is 175. Okay. Means angle ACX is 105 and angle ACB is 75 degree. Now angle C, in the figure given below, find angle A. Question number second, first ka second. In the adjoining figure, the measure of sum of angle are indicated. The value of x and y are respectively. So this is a figure. It is 40 degree. It is y, and it is 70 degree. It is L. In the adjoining figure, the measure of some angle are indicated. The value of x and y respectively. हमें x और y की value निकालनी है. See, it is x and it is y. So in this triangle, x is the exterior part. X is the exterior part, and the sum of this is, and 70 is exterior part of this side, this interior side. So we can let here it is Z. So angle Z plus, it is angle L, it is angle O, suppose it is angle M. In angle LOM, angle Z plus angle 40 is equal to 70 degree. By exterior angle of property, then angle Z is equal to 70 minus 40 is 30 degree. So it will be 30. Now we have to find x. We have to find y. Angle Z is 30 degree, angle O is 40 degree, and angle Y we will find. So in triangle LON, angle Z plus angle O plus angle Y is equal to 180 degree. बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल बन गया और ये बाय एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें 40 गिवन है और z की हमने वैल्यू निकाल लिया 30. नाउ z इज 30 डिग्री, एंगल o इज 40 डिग्री, एंड एंगल y वी हैव टू फाइंड, इट इज 180 डिग्री. नाउ एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस, it is 70 degree. So 180 minus 70 is 110. It will be 110. Now we have to find x. By exterior angle of property, x is equal to angle O plus angle y. By exterior angle of property, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होगी, उसके सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल. नाउ एंगल O is equal to 40 degree, y is equal to 110. Now 40 plus 110 is 150. So x is equal to 180. So here question number option number D, 150 is x and 110 is y. Question number second. In the figure given at right, two of the angle are indicated. What are the measures of ACX and ACB? So it is a triangle. Angle A, angle C, angle B. It is 55. It is 50.
Question number 9. Find the sum of angle A, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8 and angle 9 in adjoining figure. So we have given this figure. Angle A, E, D. Angle D, B, A. And angle D, C, B. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have given this figure. How can we find angle AED in triangle AED? Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. So it is first equation by angle sum of property. Same in triangle DAB, angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degree. So equation 2, angle sum of property. In triangle BCD, angle 7 angle 8 plus angle 9 is equal to 180 degree. Equation 3, it is also by angle sum of property. Now after add this, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 plus angle 9 plus angle 9 is equal to 3 times 180 means 540. So our answer is 540. क्वेश्चन पूछा है आपसे फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 to 9. सो सम ऑफ एंगल 1 to 9 is equal to 180 plus 180 plus 180 is 540. It is our answer. So equation, so 7.1 is finished. Now 7.2. Before solving 7.2, I will discuss about the exterior angle property of triangle. So what is exterior triangle? It is a triangle. Suppose it is A, B and C. 1, 2, 3 and it is 4. Let it is X. So if a side of a triangle is produced a exterior angle so formed is equal to sum of two interior opposite angle. Like देखो जो हमारी जो एक्सटीरियर एंगल बन रही है मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ बाहर का पार्ट ट्राइंगल के, ये आपके ट्राइंगल के इनसाइड का पार्ट है मीन्स इंटीरियर पार्ट. अब कह रहा है कि जो इसके बाहर का पार्ट है ट्राइंगल के आउटसाइड वाला एंगल दैट इज एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? इसके बिल्कुल अपोजिट वाले साइड के. इंटीरियर जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाली सम के बराबर होता है. लाइक एंगल 1 plus angle 2 is equal to angle 4 by exterior angle of property. So if a side of a triangle is produced, the exterior angle is formed is equal to sum of two interior opposite angle. So it is exterior angle property of triangle. So यही हम डिस्कस करने वाले हैं 7.2 में. So in a following figure, the values of x and y. See, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है. It is 120 and it is 80 degree. You have to find x and y. It is B, C and angle A. आपको क्या निकालना है? आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. किस तरह से करोगे? सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो 120 है, लाइक 120 है, वो एक्सटीरियर पार्ट है अंदर वाले ट्राइंगल के, बट उसके अपोजिट वाला साइड है y एंड 80. 80 प्लस y इज इक्वल टू मीन्स हेयर इन ट्राइंगल
ABC एंगल बाय प्लस एंगल AT इज इक्वल टू 120। यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी, बिकॉज जो इसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड होती है, इंटीरियर अपोजिट साइड होती है, वो बिल्कुल उससे सम के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू आपकी आएगी 120 माइनस 80 इज 40 डिग्री। सो हियर y इज 40 डिग्री एंड एंगल y इज 40 डिग्री। So can you find angle x? How can we find? See, अब ये भी triangle है। See, it is a triangle and it is the exterior angle of triangle. और इन दोनों का जो sum होता है ये इसके equal होगा। ठीक है, means हम यहाँ लिख सकते हैं in triangle ABC angle y plus angle this। अब ये वाला पार्ट आप कैसे निकालोगे? by angle sum of property। देखो यहाँ पर हमने निकाल लिया y means 40। So in triangle ABC, angle 80 plus angle 40 plus angle, suppose Z लिख लेते हैं, Z is equal to 180 degree by angle sum of property. Now 80 plus 40 is 120. Now Z is equal to 180 minus 120 is 40 degree. Sorry, 180 minus 120 is 60 degree. Now it is 60 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों का सम मीन्स x इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल लाइक 40 प्लस 60, इट विल बी 100। सो योर आंसर इज x is 100 and y. We have given this figure, angle AB and angle RP, it is P, is equal। तो मैं इसको इजी बनाने के लिए इस ट्राइंगल को ऊपर शिफ्ट कर सकती हूँ कुछ इस तरह। ठीक है, अब एंगल A है तो ये एंगल P हो गया, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। नाउ चेंज करने के बाद हमने ये इसको थोड़ा चेंज कर दिया। लाइक अगर हमारा एंगल ए बी पैरेललोग्राम है तो ये किसके इक्वल है? आरपी के, मीन्स आरपी के सी। और एंगल ए सी पैरेललोग्राम है तो एंगल पी क्यू इज पैरेललोग्राम टू एंगल ए सी। ठीक है, सी आफ्टर दिस एंगल ए इज 90 डिग्री एंड एंगल पी वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड it is parallelogram to PR, so angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle Q, because alternative interior angle, here we will use alternative interior angle because AB जो है parallelogram है PR से, तो ये वाले एंगल सेम होंगे और PQ is parallelogram to AC, तो हमारा ये वाला एंगल सेम होगा। नाउ इन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ओके, एंगल इज 90 डिग्री, एंगल B की जगह मैं एंगल R लिख सकती हूँ, सेम एंगल C की जगह मैं एंगल Q लिख सकती हूँ। एंगल P इज इक्वल टू प्लस एंगल Q प्लस एंगल R। सी अब Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो एंगल A मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। एंगल के A आपका कितना है? 90, तो आपका एंगल P भी आपका होगा 90 डिग्री। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have know that कहाँ जा रहे हो? नमस्ते। ठीक है।
Now it is 55 degree. It is also 55 degree. Now we know that about P and Z. We have to find X. Now in triangle ABC, this is Y 70 degree. This is 55 degree. And we have to find X. X plus angle 70 plus angle 55 is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree minus 70 plus 55 is it's 5. It's 125. Now X is equal to 5 55. So X is equal to 5, Y is equal to 70, and it is P. P is equal to, Y is equal to 55 and P is equal to 70. It is our answer. It is 55, not 50. Okay, it is 55. Because it is 55, that's why this is 55, because of alternate interior angle. Okay. Question number 6. We have given this figure. Here angle L and angle M. It is a parallelogram. It is X. It's given 70 degree and it is Y. We have given here 125 degree and P. So we have to find X, Y, P and angle this. So we have given angle L is parallelogram angle M. So angle this 70 degree is also angle P, means angle 70 degree is equal to angle P because of alternate interior angle. Okay. When जब आपका पैरेललोग्राम गिवन होता है ना, तो ये वाला ट्राइंगल और इसके अपोजिट वाला ट्राइंगल आपका क्या होता है, इक्वल होता है. So alternate interior angle. Now it is 70 degree. Now this one, see, in line M, let us it is Z. So angle Z plus angle 125 is equal to angle 180 degree by linear pair. Now angle Z is equal to 180 degree minus 125 is equal to 155. So it will be 155. Now it is 155. Now it is 155. So it is equal to y also. क्या हम इसको y भी बोल सकते हैं? Because of alternate interior angle. जब ये 55, जब ये it will be 55, not 155.
अगर ये आपका 55 आ गया है तो y भी आपका 55 ही होगा. It is also 55 because of alternate interior angle. Got it? Question number 3. We have given this figure. It is A, B, C and D. We have given 70 degree. It is 100 degree. And we have to find this. So question is, in the figure given below, find angle ABD. ABD, this one, and also find angle ABC, this one. If angle C is equal to thrice of angle ABC, we have given it is equal to thrice of angle ABC. C is equal to angle of ABC. Now see, angle A is equal to angle B plus angle C, sorry angle D, means जो angle A है, it is a triangle and it is the exterior part of the triangle. So it is, we have given 100 degree. Now by exterior angle of triangle, opposite side of a triangle is, the sum of angle is this. So angle A is equal to angle B plus angle D because of exterior angle of triangle. Okay. Now angle A is 100 degree. We have to find an angle B, and angle B is 70 degree. Now angle B is equal to this one, 70. 100 minus 70. It will be 30 degree. So angle B is 30 degree. Okay. Now angle ABC, this part, and angle ABD, we can say this part and this part. क्या हम इसको एंगल B बोल सकते हैं, कंप्लीट पार्ट को, ठीक है, बट हम अलग अलग लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इतना हाफ पार्ट पता है और हाफ पार्ट नहीं पता. सो वी विल टेक ABC and ABD, and angle C plus angle D is equal to, complete triangle बन चुका है, that is 180 degree. Angle sum of property, it is angle sum of property. हम एंगल B, एंगल C और एंगल D लेते हैं, देन प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने एंगल B को अलग अलग पार्ट में बांट दिया, एंगल ABC ने और एंगल ABD ने, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर ये अलग अलग इसमें डिवाइड किया है. नाउ एंगल ABC, एंगल ABC and angle ABD, angle C is equal to thrice of angle ABC. We can write down like this. Angle C is equal to thrice of angle ABC plus angle D is equal to 180 degree.
Now ABC plus thrice of the ABC is 4 times ABC. And ABD कितना है 30 डिग्री. So we can write here AB 30 degree plus D is 70 degree. It will be 70 is equal to 180 degree. Now 4 times angle ABC plus 30 degree plus 70 degree is equal to 180 degree. 30 plus 70 is 100. 4 times angle ABC is equal to 180 minus 100. It will be 30. Sorry, it will be 20. Now angle ABC 4 times यहाँ चला जाएगा. Angle ABC is 5. Sorry, it will be 20. Now 4 times ABCD. 4 times angle ABC is equal to 100. It will be 100. Now 180 minus 100 is equal to 80 degree. So angle ABC it is 4 times. So it will be divided from 80. Now angle ABC is equal to 20 degree. So our answer is 20 degree. Question number 4. We have given this figure A, B, C and D. It is 52, it is C and it is 40. 50 and it is E. Okay. This one is E, this point is E. Okay. Now in the figure given at right, find angle. First we will find about angle ACD. Angle ACD हमें क्या find करना है? Angle AC and D. This. Okay. And angle second is angle AED. First हमें find करना है angle ACD. Where is ACD? A, C and D. This one. Okay. So angle C is exterior point, exterior angle of opposite side of this triangle. So angle C is equal to angle B plus angle A. We can write here by exterior angle of property. Now angle C
is equal to angle B is 40 degree and angle A is 15 degree. Now 40 plus 15 is 55 degree. Now angle C is 55 degree. Now we have to find angle AED, AE and D. This one, this angle we have to find. So this is exterior point of angle C and D. So angle E is equal to angle C plus angle D. Exterior angle of property. हमें ब्रैकेट में ये लाइन लिखनी होती है बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि जो हमने ये लिखा है इसका प्रूफ क्या है, क्या क्यों किस रीजन से हमने ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी है. सो यहाँ पर लिखना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ एंगल ई इज इक्वल टू व्हाट इज द एंगल सी. एंगल सी इज 55 डिग्री प्लस एंगल डी इज 52 डिग्री. इट विल बी 107. So angle A is 107 and angle C is equal to 55 degree. Next question, question number 5. This is a figure. It is 40 degree. Z, Y, 30 degree. X, 80 degree. C and D. It is B, it is A. In the figure given below, find angle X, angle Y and angle Z. Now see, Y is the exterior point of angle 40 plus angle 30. It is the opposite side of a triangle. So how can we find Y? Y is equal to angle 40 degree, and 40 degree means angle B plus angle A is 30 degree. So Y is equal to 70 degree. By exterior angle of property, now we know that about the value of, we know that the value of Y, we can find X here. So angle X plus angle Y is equal, angle Y plus 80 degree is equal to 180 degree by angle sum of property. Angle sum of property because it is a triangle and sum of this angle of a triangle is 180 degree. It is a sum of angle sum of property here. Okay, now X is equal to X and what is the value of Y is 70 plus 80 is equal to 180 degree. Now X is equal to 180 minus 70 and 80 is 150. Now it will be 30 degree. So X is equal to 30 degree. Now we have to find Z here. Z is equal to, actually Z is exterior point of this side, this opposite side. So angle Z is equal to angle A plus angle C. Exterior angle of property. Now angle Z we have to find angle A. X is equal to 30 degree plus angle C is equal to 80 degree. It will be 110. So X is equal to 30 degree, Y is equal to
Where is the y? (70°) and z is equal to 110 degree. Question number 6. In a triangle, an exterior angle of at a vertex. Suppose it is a triangle. It's all our vertex. Here it is a corner of a triangle. Let it A, B, C, D. Okay. Now question is, in a triangle, an exterior angle at a vertex is 95 degree, and it's one of the interior opposite angle is 55 degree. Find all angle of a triangle. Means this and this we have to find. So first, angle C is equal to angle A plus angle B because of exterior angle of property, and by the exterior angle of property, angle C is 95 degree, angle A is 55 degree, and angle B we have to find. So angle B is equal to 95 minus 95 minus 55, because ये 55 इससे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 95 में से 55 कट करते हैं, it will be 4. So angle B is equal to 40 degree. So by angle sum of property we can find this angle. So let it be x. So angle A plus angle A plus angle B is equal plus angle x is equal to 180 degree by angle sum of property. Angle A is 55, angle B is 40 degree, and angle x, let x is equal to 180 degree. Now x is equal to 55 plus 40 is 180 minus 95. So 180 minus 95 is it is our answer. Last question 7. One of the exterior angle of a triangle is, again this question, one of the exterior point of a triangle is 80 degree, and the interior opposite angle are in the ratio of 5:3. 5 ratio, it will be it is in ratio. Now find the angle of a triangle. We have to find angle of a triangle. So first angle, let angle x 5x plus angle 3x is equal to angle C, this one, this angle C. Because it is exterior point and interior opposite sides are these. So let 5x plus 3x is equal to angle C. Now 5x plus 3x is 8x plus angle C is equal to 80 degree. Now x is equal to 80 minus 8, 10. So x is equal to 10. So 5x is equal to 5 into 10, it will be 50, and 3x is equal to 3 into 10, it will be 30. So it is 50 degree and it is 30 degree, and we have to find here this y. So by angle sum of property, angle A plus angle B, angle A plus angle B plus angle C inside plus angle y, this
is equal to 180 degree by angle sum of property. Angle A is equal to 30 degree plus B is equal to 50 degree, and we have to angle Y. We have to find angle Y 180 degree. So Y is equal to 180 minus 50 plus 30 is 80. So it will be 100. So this is our answer.